Morning and evening, students. Start with the name of Almighty Allah. We start today's lecture. According to the course plan, this is our lecture on pharmaceutics, LADMER, liberation, absorption, distribution, metabolism, elimination, and response. Today's lecture, I am going to deliver from the book Alton, chapter 18, part 4, Introduction to Biopharmaceutics. This is the figure about ADME. We will go through this today, inshallah. Okay, student, as you know, that except the intravenous route of administration, there are other way of route administration in which the drug is administered at a site of action, or sometimes it may be far away from the site of action, like in oral route of administration. Involve the absorption of the drug into the blood. Once the drug reaches the blood, it partitions between the plasma and the red blood cells, usually composed erythrocytes. Drug dissolve in the plasma partition between the plasma protein, जो कि albumin होती है, and the plasma water. It is the free, unbound drug in the plasma water and not the drug bound to the protein that passes out the plasma through the capillary endothelium and the tissue and hence the site of action. वो ड्रग जो कि अनबाउंड होती है प्लाज्मा में, वो जब एंडोथेलियम से पास होकर साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती है, तब वो अपने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. तो सबसे पहले लैडमर में व्हाट इज एल? एल इज द लिबरेशन. Liberation is the first step in the process by which medication enter the body and liberate the active ingredient that has been administered. The pharmaceutical drug must separate from the vehicles or the excipient that it was mixed with during manufacture. Absorption is the transfer of a drug from its site of administration to the bloodstream. Most of drugs absorbed by the way of passive transport. We will discuss this transportation of drug in our later classes. Right now, it is necessary to understand what is absorption. तो absorption आपको बताया कि transfer of a drug from its site of administration to the bloodstream. Most of drug absorbed by the way of the passive transport. IV administration has no absorption. Why no absorption? Because it's directly entered into the systemic circulation. Drugs which are unionized, ionized नहीं है, लो polarity, उसकी polarity भी ज़्यादा नहीं है, and the high lipid solubility are easy to permeate
membrane, or drugs which are ionized, having highly polarity and low lipid solubility, are difficult to penetrate the membrane. These two things are necessary to understand about the drug which can pass easily through the membrane and which drug not easily pass through the permeate membrane. तो कौन सी ड्रग है? वो ड्रग जो कि अनआयोनाइज है, लो पोलैरिटी रखती है और हाईली लिपिड सॉल्युबल है, वो इजीली पास हो जाएगी with the help of the peptide transport, but the drug which are ionized, having a high polarity and a low lipid solubility, are difficult to permeate the membrane. स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया इस लैडमर की डिस्क्रिप्शन में, आप इस फिगर 18.1 को देख सकते हैं। ये फिगर ऑल्टिन की है कि ड्रग एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्स्ट्रावेस्कुलरली, ठीक है। तो इसमें एब्जॉर्प्शन है, यकीनन वो किसी मेम्ब्रेन के थ्रू होगी, देन वो आपके ब्लड के अंदर आएगी। मगर हमने ये बात कही कि एक ऐसा भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें कि वो एब्जॉर्प्शन बाईपास हो जाती है। वो कौन सा है? इंट्रावीनस इंजेक्शन, आईवी। तो अब जब ड्रग एब्जॉर्प्शन के मरहले से ब्लड के अंदर आई है तो यकीनन आपको बताया गया कि दो तरह का फिनोमेना हो सकता है। कौन कौन से दो? या तो वो बाउंड होगी या वो अनबाउंड फॉर्म में होगी। So now the distribution starts from this stage. A dynamic equilibrium normally exists between the concentration of a drug in the blood plasma and the concentration of the drug at its site of action. The extent of distribution of drug depends on its lipid solubility, ionization at the physiological pH, extent of binding to plasma and the tissue protein, and the differences in the regional blood flow, like in case of any disease, like at CHE. Disease condition जैसे कि congestive heart failure, uremic, in this condition urea component is found in blood. Cirrhosis is the liver damage. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन को आप जरा इस फिगर के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ड्रग इन द टिश्यू इंक्लूडिंग द ब्लड सेल एंड अदर फ्लूइड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे लिम्स, इंटेस्टिनल फ्लूइड। तब के इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है कि ड्रग जो है वो अपने साइड ऑफ एक्शन के ऊपर जा रही है, तो साइड ऑफ एक्शन पे जा रही है और वहां पे वो क्लिनिकल इफेक्ट या हम कहें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो कि हमें डिजायर है वो प्रोड्यूस कर रही है। तो आफ्टर लिबरेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एट दिस स्टेज यू कैन सी द डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन को हमने अंडरस्टैंड कर लिया, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन द ब्लड प्लाज्मा एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन। और हमने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है एट द साइट ऑफ द एक्शन, ये डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर? लिपिड सॉल्युबिलिटी के ऊपर, आयोनाइजेशन एट द फिजियोलॉजिकल पीएच, या और इसके अलावा एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू द प्लाज्मा एंड द टिश्यू प्रोटीन, और इसके अलावा उस रीजनल ब्लड फ्लो के ऊपर, और कुछ ऐसी बीमारियां जो कि इस
डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसा अंदाज कर सकती हैं जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यूरेमिया और सिरोसिस. Okay, after understanding the liberation, absorption, distribution, आपको एक चीज और हम ये बताते चलें कि ड्रग का साइड ऑफ एक्शन पे पहुंचने को हम इतनी आसानी से एस्टिमेट तो नहीं कर सकते जब अनटिल अनलेस कि वो अपना इलिसिट करे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. तो अगर हमें किसी ड्रग की एफिकेसी, उसकी कंसंट्रेशन को चेक करना होता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम ये डिटरमाइन करते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा वो कितनी है. इसको हम कह सकते हैं कि हम सैरोगेट स्टडीज करते हैं फॉर द कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन, क्योंकि बाउंड और अनबाउंड ड्रग इन द प्लाज्मा मौजूद होती है, जो कि हमें बेहतर अंदाज से हम एस्टिमेट कर सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन. ये वैसे तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव ऐसे हमें रिक्वायर्ड होता है एस्टिमेशन के लिए कि ड्रग कितनी ब्लड में मौजूद है या प्लाज्मा में मौजूद है जो कि अपने इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है. चले भाई, लैडमर में अब हमारा लिबरेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अब आया एम. एम मेटाबॉलिज्म या आप इसको कहें एलिमिनेशन. अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है? The drug can either be enzymatically cleaved or biologically transformed, in which case it is said to have metabolized or be excreted unchanged. The study and the characterization of the time course of a drug absorption, distribution, metabolism, and excretion ADME is termed pharmacokinetic. Chemical alteration of the drug in the body mean to convert non-polar lipid-soluble component to polar lipid-soluble insoluble component to avoid reabsorption in renal tubules. Most of hydrophilic drugs are less biotransformed and excreted unchanged. For example, streptomycin, neostigmine, and pancuronium. A biotransformation is required for the protection of body from toxic metabolites of drugs. After understanding metabolism या हम कहें कि elimination, जो कि लिवर के जरिए से, तो हम फिर इस मेटाबॉलिज्म को या एलिमिनेशन को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये एक बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ड्रग मेटाबॉलिज्म है, कि एक ऐसा प्रोसेस है by which the drug is chemically converted in the body to its metabolites. Biotransformation is usually an enzymatic process. A few drugs may also be changed chemically by non-enzymatic process. For example, like in ester hydrolysis. मगर जो enzymes involved in the biotransformation of a drug are located mainly in the liver. Other tissues such as kidney, lungs, small intestine, and skin also contain
biotransformation enzymes. Okay, after understanding metabolism, elimination, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या है? ड्रग एक्सक्रीशन is the removal of the intake drug. Non-volatile drugs are excreted mainly by renal excretion, a process in which the drug passes through the kidney to the bladder and ultimately in the urine. Other pathway for the drug excretion may include the excretion of a drug into bile, sweat, saliva, milk, and other body fluids. Volatile drugs such as gaseous anesthetics or a drug with a high volatility are excreted by the lungs into expired air. Usually, this excretion is a transport procedure which the prototype drug or parent drug or its metabolic products are excreted through excretion organ or secretion organ. The route of drug excretions are kidney, biliary excretion, sweat and saliva, milk and pulmonary organ. जैसे कि आप फिगर 18.1 के अंदर आपको दिखाया गया है कि किस तरह से some of the factors that can influence the concentration of a drug in the blood plasma and also at the site of action. और biopharmaceutics क्या है? Biopharmaceutics is concerned mainly with the first stage, getting the drug from its site of administration into the bloodstream या फिर आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आ जाए. स्टूडेंट, ये एक और फिगर है जिसमें कि कोशिश ये की गई है कि आपको समझाया जाए लैडमर. लैडमर हमने कहा था लिबरेशन फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म से. अब वो ओरल है कि रेक्टल है, परकुटेनियस है, इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है कि इंट्राथीकल है या इनहेलेशन के जरिए से दी जा रही है. अब वो कोई सा भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, यकीनन वो कोई डोजेज फॉर्म से होगी. उस डोजेज फॉर्म से वो लिबरेट हो रही है और अब उसकी एब्जॉर्प्शन होगी. अब ओरल होगी या रेक्टल होगी तो वो गट में जा रही है, परकुटेनियस होगी तो स्किन में जा रही है, इंट्रावीनस है तो डायरेक्टली वो प्लाज्मा में जा रही है, और इंट्रामस्कुलर है तो वो मसल से फिर वो प्लाज्मा में जा रही है. इंट्राथीकल है तो वो CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिर वो प्लाज्मा में जा रही है ब्रेन को क्रॉस करके. अगर इनहेलेशन के जरिए से ली जा रही है तो यकीनन वो लंग के थ्रू प्लाज्मा में जा रही है. ये मरहला हो गया एब्जॉर्प्शन का. अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो ड्रग है आपको बताई गई बाउंड एंड अनबाउंड दोनों फॉर्म में मौजूद है. अब वो या तो प्लाजेंटा में जाएगी, अगर वो प्लाजेंटा को क्रॉस कर सकती है बैरियर को, वो फीचर्स में जा सकती है. इसके अलावा वो लिवर में जाएगी, वो वहाँ से फिर बाइल में मौजूद है. ठीक है, ये डायनेमिक फिनोमेना जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं. फिर उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, फिर प्लाज्मा से ड्रग यकीनन किडनी में भी जा रही है जैसे कि हमने देखा नॉन वोलेटाइल के सब्सटेंस के अंदर. फिर उसके अंदर वो ब्रेस्ट के अंदर भी जा रही है, वो स्वेट ग्लैंड के अंदर भी जा रही है. ठीक है, दिस इज द मेटाबॉलिज्म. After metabolic pathway,
ड्रग आपकी एलिमिनेट हो रही है। अब वो उसकी एलिमिनेशन कहाँ कहाँ से हो रही है? वो यूरिन के जरिए से भी हो रही है। यूरिन जो कि मेटाबोलाइट किया हुआ ड्रग किडनी के अंदर, तो वो यूरिन में एलिमिनेट हुई। ठीक है, वो फिजिक्स में गई। इसके अलावा वो मिल्क के जरिए से, स्वेट के जरिए से, और अगर वो इनहेलेशन के जरिए से ली गई है तो फिर वो एक्सपायर होगी एयर के जरिए से। ये आज का टोटल लेक्चर था लैडमेर को लेके। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अवर कोर्स प्लान हमने ये तमाम टॉपिक कवर कर लिए। अब इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन पर होगा। हम डिस्कस करेंगे आपसे फोर्सेस दैट हेल्प इन द ट्रांसमेम्ब्रेन मूवमेंट, एनाटॉमिकल and physiological factor influencing the absorption of drug. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. Have a good day.